आज हम लोग 600 क्वेश्चन देखेंगे अभी लाइब्रेरी साइंस के। पहला नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन नेशनल लाइब्रेरी 362 डेज होता है। फिर हम लोग कहते हैं लोटकाज लॉ डील्स विथ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। नंबर 3 देखेंगे द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाई वेलोसिटी कम्प्लेक्स एंड वेरिएबल डेटा आर टर्म्ड एज बिग डेटा। फिर कहते हैं सोनी अनवेलिड द फर्स्ट ब्लू रे प्रोटोटाइप इन अक्टूबर 2000। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ISO 26324:2012 इज स्टैंडर्ड फॉर DOI। फिर उसके बाद हम लोग से ISO 2108 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब साथ में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड्स क्या होता है ट्रांजैक्शन स्लिप ब्राउनी में नहीं होता था। फिर कहते हैं इन CC फर्स्ट is used for unity god world first in evolution etc is seminal mnemonics। फिर आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न कौन सा है तो लेमिनेशन है। नंबर ऑफ सक्सेसिव कैरेक्टर्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज ऑर्डर ऑफ क्लास। फिर कहते हैं व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन जो है क्लासिक एंड सीक्रेट बुक्स है थर्ड पार्ट में। सब्जेक्ट एंट्री विच रेफर्स फ्रॉम द नेम ऑफ द क्लास टू इट्स क्लास नंबर इज नोन एज क्लास इंडेक्स एंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे द लाइसेंस फॉर असेसिंग द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन इज अवेलेबल थ्रू रूलटेज जो कि टेलर और फ्रांसिस का है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द पेरियोडिसिटी ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ जो कि निस्केयर के द्वारा पब्लिश होता है तो ये क्वार्टरली है। फिर कह सकते हैं कि वन फेसेट पब्लिशिंग इज़ अ वर्जन ऑफ कहेंगे चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हु डिफ्रेंशिएटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द फॉलोइंग वे इंफॉर्मेशन इज piecemeal fragmented particular whereas knowledge is structured coherent and universal। ये किसका था तो हम कह सकते हैं F मैचलप और U मेंसफील्ड का था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द जोनल ऑफिस ऑफ RRLF इज लोकेटेड तो इसका आंसर हो जाएगा जोनल ऑफिस जो है वो RRLF का है जो है वो हमारा है दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। तो और यहाँ से हम लोग 18 पे आते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द सिल्वर हैलाइड प्रोसेस आर यूज्ड फॉर रिप्रोग्राफी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक्सपोजर के लिए होता है, फिर डेवलपिंग के लिए होता है और कह सकते हैं रिंचिंग के लिए होता है। इन तीनों चीज़ों के लिए होता है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू द स्कोनल। तो हम कह सकते हैं कि गैदर आइडेंटिफाई एंड मैनेज, ये BCD हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन आइसबर्ग। तो इंफॉर्मेशन आइसबर्ग में क्या होता है 1/4 विजिबल होता है 3/4 इनविजिबल होता है, ठीक है। 21 में देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज MSD 5। फिर वर्ल्ड बैंक बुक एंड कॉपीराइट डे कब है तो 23 अप्रैल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेचर इज थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिसी हैज 7 इंक्लूड्स इन नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। कह सकते हैं आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दी रंगनाथन रिमार्क्ड एज ट्रिवियल टूरिज्म इन हिज राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मॉडल। तो फर्स्ट लॉ में विकीपीडिया ओन्ड बाय द नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया फाउंडेशन वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 15, 2001 किसके द्वारा तो कह सकते हैं जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा। फिर अनुकृति क्या है तो अनुकृति एक ट्रांसलेटिंग इंडियन वेबसाइट है। फिर कह सकते हैं इज प्रॉक्सी इज अ प्रोडक्ट ऑफ OCLC। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं क्लस्टर। हम लोग 30 पे आते हैं 29 पे हु क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन एंट्री एज अ रिलिक ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी माइकल गोमेन। फिर आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, यहाँ रेफरेंस एंट्री है, सेंटर एंट्री है, एनालिटिकल है, एडेड है। तो हम कहते हैं सेंटर्ड एंट्री इसमें अलग है, ठीक है। और द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस इज डेवलप्ड बाय तो किसके द्वारा किया रॉबर्ट हाउस के द्वारा कि ये अम्ब्रा
an innovative open source platform for publishing open access resource articles. तो इसके हम लोग कह सकते हैं किसका है, तो PLOS का है. फिर द टर्म वेबलॉग इज वाज क्वाइंड बाय जॉर्न बर्गर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल होस्टिंग सर्विस, तो एक्सबॉक्स लाइव. कि VU फाइंड इज द टूल यूज्ड फॉर लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम. फिर 36 विच वन इज करेक्ट बाइनरी नंबर फॉर 115. ये तो निकाला जा सकता है, 1110011 है इसका. ठीक है. रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन द कॉन्सेंसस ओपिनियंस ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड जजमेंट इज नोन एज डेल्फी मेथड. फिर कह सकते हैं कि अ प्रोबेबिलिटी विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. इन इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स आर ए मूवमेंट वाज इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम बड़ोदरा. ठीक है. उसके लाइब्रेरी ग्रोज एंड ग्रोज इंडलेसली इज फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट लेवल. फिर कहते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रेजेंटली इज. इसमें तो कोई नहीं है, मतलब प्रेजेंटली अभी 19 है, 19 स्टेट्स में है. फिर कह सकते हैं इंडियन फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इज तमिलनाडु. ठीक है. उसके बाद कह सकते हैं कि इन इंडिया बुक वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है. इन इंडिया द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्टेड एट बड़ोदरा इन 1911. उसके कहते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA हैज इंस्टीट्यूटेड डैश फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग. लोग कह सकते हैं कैडकॉट मेडल. उसके बाद ओपन एक्सेस सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी इज स्पेसिफाइड इन थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड इफिशिएंट चार्जिंग सिस्टम is the implication of fourth law of library science. First Indian university that converted the diploma in library science into bachelor degree was, जिस डिप्लोमा को बैचलर में कन्वर्ट कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. फिर लिखा है कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस. द पेटेंट आर रिगार्डेड एज प्राइमरी सोर्स. ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर. Which of the following is a technique to train a professional staff within the library? Job rotation. According to Ranganathan, the percentage of total money of library budget to be spent on the reading material should be 40%. The most important aspect of management is perform analysis, budget, cost benefit analysis. All of these हो जाएगा. The PPBS technique was developed by PPBS टेक्निक किसके द्वारा हो गया था, तो रेंड कॉर्पोरेशन के द्वारा. फिर PERT मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. फिर द जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1970. द 7 स्टेप ऑफ प्लानिंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय कह सकते हैं हेनरी फ्यूल. सिस्टम एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इज कैरिड आउट फॉर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी रूटीन, इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. कि थेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कह सकते हैं थेसिस किसका एग्जाम्पल है, तो कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का. 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1931. बना था 1928 को, पब्लिश हुआ 1931 में. दी ग्रांट फ्रॉम द UGC फॉर द एकेडमिक लाइब्रेरी इज कॉल्ड एडहॉक ग्रांट. 64 पे आते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेन एंट्रीज इन द क्लासिफाइड कैटलॉग इज बाय अ क्लासिफिकेशन स्कीम. द इंडेक्स periodicals provides us whole bibliographical description of articles. The frequency of Indian National Bibliography is monthly. The number of language books which are covered in India's National Bibliography is 15. The collection of maps, tables and charts is called atlas. Translation of document is not a source, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी कह सकते हैं, तो नोट सोर्स, सोर्स ही नहीं है. कि दी सोर्स विच आर अवेलेबल चीपली इन द प्रिंटेड फॉर्म इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री. अब 71 पे आते हैं. इन अ लाइब्रेरी स्कीम ऑफ कलेक्शन नंबर आर डिवाइज्ड एंड मेंटेन्ड बाय technical section. A database is a collection of record in machine readable form. The e-book means any book available in electronic form. In which scheme for classification the number 999 is free एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सब्जेक्ट. हम कह सकते हैं कोलोन और डेसिमल क्लासिफिकेशन दोनों के लिए. फिर कह सकते हैं हेडिंग विच इज़ पार्टली रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट साउट इज बेसिक सब्जेक्ट. द कैटलॉग कोड विच प्रोवाइड्स 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज CCC भी हो सकता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड भी हो सकता है, ASCR2 भी हो सकता है, डिक्शनरी कैटलॉग कोड भी हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वाज कंसिडर्ड कंप्लीट
कोडिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट कैटलॉग, तो कहते हैं रंगनाथन कोड होगा। 70 द कैटलॉग ऑफ बुक्स related to places is topographical catalog, a process of gathering, processing, representing in storage of information in a database is information processing. A sequence of actions which results in obtaining required information is called retrieval system. A micro version of CDS-IS package is written in Pascal language. The Wacom tube were used in which generation of computer? First generation. Which of the following types of memory is volatile? RAM. The string of 8 bits is called byte. Librarians are grouped under which category of library staff according to the UGC library committee? हम कह सकते academic. Surveyors of the user are most useful in public library. Which of the following is related with library user education? P. NAP. KNAPP. Initiation of the readers means orientation. Which Egyptian king called his library a place of healing for the souls? Amenmesse. Open access system was first initiated by British Museum. How many parts are there in 13-digit ISBN number? 5 पार्ट होते हैं ISBN में. Which of the following service is designated to identify the most suitable document to a specific user? तो suitable document को specific user तक ले जाने का सबसे अच्छा क्या है? हम कहते हैं कि SDI है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर रिसर्च क्या है? रिसर्च आर बोथ कंज्यूमर एंड जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? फर्स्ट लॉ. फिर ऑथर्स राइट्स टू क्लेम ओनरशिप of created work is under intellectual property right. Indian science abstract are published by Nisker. Raja Ram Mohan Rai Library Foundation was established to develop public library. Universal availability of publication was launched by IFLA, International Federation of Library Association. Resources sharing among the libraries was originally known as Library Corporation. RRLF is a हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी फॉर सपोर्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज. नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि ड्राफ्ट है फॉर्मुलेटेड बाय RRRLF. लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान्स फॉर इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय SR रंगनाथन. हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बुक्स शुड बी सेंड बाय पब्लिशर अंडर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट? 4 कॉपीज. द बेसिक इंफॉर्मेशन रोल ऑफ अ लाइब्रेरी इज टू collect and disseminate information. Head office of Delnet is located at Delhi. Book for all is variant of second law. A library that is entitled by law to receive a free copy of every book published in depository library. The library which serves all the members of the society without distinction of age, sex, caste and creed is public library. The open access to the shelves contributes to the fulfillment of third law. The activity of knowing, acquisition or organization and use of knowledge is known as cognition. What is the standard size of catalog card? 12.5 into 7.5 centimeter. In which state there is no provision of library cess in public library acts? आंध्र प्रदेश. इन सब में आंध्र प्रदेश है. ठीक है. सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो ऑन रिकॉर्ड इज नोन एज अकाउंटिंग. अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन predominant sequence is known as processing. In computer terminology, the usage bug stands for programming error. The full form ERNet. ERNet का मतलब है Education and Research Network. MS Office is a software. InflipNet is proposed to link up mainly academic libraries. Which of the following is multi-user? हम कहते हैं LAN system, LAN, Local Area Network system जो है multi-user system है. Decimal fraction notation was first used by, तो ये किसके द्वारा used हुआ? मेल्विन डेवी के द्वारा. फिर colon of modulation falls under chain. According to colon classification, J is known as agriculture. A scheme for classification that is based on some characteristics of books which do not provide a reliable guidance regarding subject matter is artificial classification. In which scheme for classification provision for arranging both minor and major topics is made by leaving gaps in notation? Debye decimal classification. कहते हैं a work which is treated as a subject by itself is quasi subject.
Detailed classification required for macro documents is known as depth classification. A suitable reference source to know about the climate of Jaipur is uh, Gazetteer. Which of the following is not a computer programming language? तो बाकी तीनों है ASCII ASCII. The tracing section helps to identify the added entries. Catalog is referred to as tool. Open general access system in India is mainly managed by InfluNet. Information is both products and processes statements was given by J. Martin. A Mark 21 subject assessed file are 6xx. Digital library functions incorporates कह सकते हैं creating and capturing, storage and management, abstracting and reviewing, मतलब all of this. Vocabulary is the database is controlled by both standard files and authority files. CCF bibliographic record refers to data transfer and standard tags of data indemnification. बेसिकली शोध गंगा इज रिपोजिटरी ऑफ ई थीसिस. उसके कहते हैं कि द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रुक्स. सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय शेनन वेबर. कह सकते हैं हु सेड दैट नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स, वी नो अ सब्जेक्ट आवर सेल्व्स और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट. कह सकते हैं कि सैमुअल जॉनसन. फिर कहते हैं एक्रोनिम फॉर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज एसलिव. सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एटलस, द डेमोग्राफिक एटलस. अब 143 की तरफ आते हैं. राउटिंग ऑफ पीरियडिकल्स इज CS. फिर बुलियन लॉजिक वाज propounded by George Boole. IMCE stands for International Meeting of Cataloging Experts. फिर the indispensable functions of thesaurus is representation of relationship between concepts. Book number helps in individualizing the book within the same class number. The library budget prepared without considering the previous year budget is zero-based budget. The abbreviation MB is state the storage capacity refers to megabyte. The abbreviation KB states state the storage capacity refers to kilobyte. Data about data is known as metadata. The concept of micro photography was developed by John Benjamin Dancer. Which among the following is digital library software used in the creation of an house इन-हाउस डिजिटल लाइब्रेरी. इन हाउस मतलब लाइब्रेरी के अंदर. तो कहते हैं ग्रीन स्टोन एक इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है. ठीक है. अब कह सकते हैं कि SSDC refers to the National Documentation Center, now known as NASDOC, NASSDOC. Annual convention of InfluNet organized to discuss the program of library automation and library services is known as Caliber, CALIBER. Identify the correct chronological order of in which they are set up. INSDOC, DRTC, NESDOC, RRRLF. मतलब सबसे पहले INSDOC, फिर DRTC, फिर NESDOC, फिर RRRLF, सबसे लास्ट में RRRLF बना है. 157 पे आते हैं. URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर. जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज propounded by पीटर. फिर कहते हैं अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेबसाइट्स. इफ टू साइटेशंस आर साइटेड टुगेदर इट इज नोन एज को साइटेशन. ग्रेड लिटरेचर मीन्स अ लिटरेचर विच इज नॉट पब्लिश्ड एंड नॉट अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बुक selling channels. A smallest unit of data in a database is filled. The term bandwidth refers to the speed of transmission of data. Which of the following factors are not considered in the making of a library budget? The age of library users. OCLC is Online Computer Library Center. The first library science schools in the world is by Melvin Davey at Columbia University. The decision to make or not to make entry under the subject term is governed by canon of ascertainability. Span of control refers to the number of subordinates to be supervised. फिर कहते हैं select the right chronological sequence of information system as per their years of establishment. तो इसमें हो जाएगा कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम INIS, एग्रिस और निशात.
इसका आंसर था 169 का। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें था स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी का, फिर सीडी का, फिर फ्लॉपी डिस्क का, फिर पंच कार्ड का, सबसे कम पंच कार्ड का। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कह सकते हैं बेकोन का है, फिर हैरिस का है, फिर मेलविन डेवी का है, फिर जेडी ब्राउन का है। ठीक है, फिर क्या है, हरबर्ग्स इज टू फैक्टर थ्योरी डील्स विथ, तो कैसे मोटिवेशन के लिए था। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट वाज प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू हुमले। क्या कहते हैं, प्री नेटल कैटलॉगिंग मीन्स प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हु डिफाइंस रेफरेंस सर्विसेज एज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन पर्सनल वे। ये किसका स्टेटमेंट था, एस आर रंगनाथन साहब का था। फिर WIPO, वीपो का मतलब क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हम कह सकते हैं डेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, सही बात है। थिजेरस लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टर, सही बात है। ISBN जो ये है, तो ISBN सीरियल नंबर के लिए, सही बात है। डिजिटल लाइब्रेरी में प्रिंट नहीं, तो कैसे डिजिटल में प्रिंट होगा, ये तो गलत है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। एन एंट्री इज एन एब्स्ट्रैक्टिव जनरल कंसिस्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन। फिर कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर इज एन इनफॉर्मल चैनल, अ टर्म कॉइंड बाय TJ Allen। A national library for the visually handicapped is located at Dehradun। फिर कहते हैं orientation of library users is a kind of reference service। फिर information communication among knowledgeable person is known as invisible college। The GMD general material description is a catalog entry according to AACR2 revised edition is given after the title proper। ISDN stands for International Services and Digital Network। The following is the search engine for scientific information only। कह सकते हैं SCIRUS, SCIRUS। Maslow theory is related to motivation। Planner is sponsored by Inflibnet। because search strategy is the mirror in the dark। whose quotation is this? Kurtz, KRTZ। Indest is a consortium। फिर आगे हम लोग कहते हैं 190। ISBN नाउ कंसिस्ट ऑफ 13 डिजिट। ISSN नाउ कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट। कोडोन कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट। नेशनल लाइब्रेरी वीक इज ऑब्जर्व इन इंडिया इन नवंबर। कि ये आइजक कोलिजिन वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IFLA। हु इंट्रोड्यूस ओपन एक्सेस सिस्टम इन इंडिया? W.A. बॉर्डन। The concept of anomalous state of knowledge मतलब ask was proposed by Nicholas J. Belkin। The concept technological gatekeepers was first proposed by TJ Allen। UNICIST is a collaborative program of UNESCO and IFLA। फिर हम लोग कहते हैं फेयर यूज इज अ टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू कॉपीराइट। बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न्ड विथ कॉपीराइट। द क्वेश्चन वेयर इज विजडम वी लॉस्ट in knowledge is by T.S. Eliot। Entropy is measure of degree of uncertainty information। Conpolis जो कि इंडिया का है was set up in the year 1986। First time effort for the development of libraries in India was made Siaji Rao Gaikwad III। And an e-book which does not require an internet connection to access content is digital book। Emerald full text database is published in UK। Who pronounced conservative moderate and liberal theories of reference service? तो जेम्स आई वायर। कह सकते हैं कि द इनपुट सेंटर फॉर INIS इन इंडिया इज बार्क। द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन DDC वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम 14 एडिशन। RDA स्टैंड्स फॉर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड SS। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया is assigning the ISBN? Raja Ram Mohan Rai National Education Research Center, New Delhi। The term cyberspace was first used by William Gibson। RFID technology used in circulation according to canon of ascertainability। Which page of the book is the chief source of information? Half title page। Who represent India as a national delegate from India to the International Conference on Cataloging Principle at Paris in 1961? B.S. Kesavan। Seymour Lubezki
name is associated with cataloging. Rules for dictionary catalog was devised by C.A. Cutter. Chain procedure refers to deriving class index entry. In 1966, a mark as a pilot project was launched by Library of Congress. The decision to make or not to make an entry under the subject terms is governed by canon of ascertainability. Prenatal cataloging stands for cataloging in publication. Canon of recall value was developed by R.S. Ranganathan. According to AACR2, University Grant Commission was rendered as India University Grants Commission. Work of unknown authorship is called anonymous work. According to AACR2, if a book has been edited by 4 persons, the main entry should be made under title. उसके बाद कहते हैं cheap source of information for cataloging is a monograph. Cataloging a monograph is title page. In CCC मतलब class index entry are prepared only for south links. In classification for music, if at the first level music is divided into class and cinema music, which canon of classification is violated? Both the canon of exclusiveness and canon of exhaustiveness. The connection between ISBD and cataloging code is a cataloging code use ISBD. अब 231 पे आते हैं. Under AACR2, the main catalog entry for the report published by the Department of Psychology of the MS University of Baroda should be rendered as MS University Baroda Department of Psychology. CCF stands for Common Communication Format. The concept of prenatal cataloging was introduced by S.R. Ranganathan. ISBD stands for International Standard for Bibliographical Description. According to canon of ascertainability, which page of the book is cheap source of information? Half title page. Rule of dictionary catalog was devised by C.A. Cutter. Chain procedure refers to deriving class index entry. A system of cataloging for a book before its publication is referred to as cataloging in publication. Resource sharing is a sharing of all source, services, tools and staff. Real-time access refers to access which searched for. Which of the following is not a bibliographic description standard? UDC. WorldCat is a service of OCLC. MESH is an example of subject heading. Analytical entry is prepared for part of a document. DOI always starts with the digit 10. A mark format 0xx code field denotes control information. Which of the following is not a canon for cataloging? Canon of exclusiveness. Unimark was developed under the umbrella of IFLA. WorldCat is maintained by OCLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर. The principle of local variation are mainly applicable in cataloging. Which one is not a canon? कह सकते हैं canon of comprehensiveness. फिर union list is the record of periodicals available in a group of libraries. In CCC, pseudonym real name entry is a cry, CRI, cry. फिर उसके बाद कह सकते हैं इन AACR2 GMD स्टैंड फॉर जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन, वही डिस्क्रिप्शन डिजिग्नेशन, वही जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन. In AACR2, the description is divided into 8 areas. In AACR2, इन 2 स्टैंड्स फॉर एडिशन, मतलब जो 2 है वो सेकेंड एडिशन को दिखा रहा है. AACR रेफर्स फॉर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, डी ब्रैकेट डी. उसके बाद आगे हम लोग का तो हु इनिशिएटेड द चेन प्रोसीडर? रंगनाथन. ISBD आर फॉर्मुलेटेड एंड ब्राउट आउट बाय इफ्ला. मेन एंट्री इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कंटेन्स 6 सेक्शन. फाइंड आउट ऑड वन. AA कोड है, AACR2 है, CCC है, CCF है. CCF सबसे अलग है. मार्क इज एक्रोनिम फॉर मशीन रीडेबल कैटलॉग. फिर 63 द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग वाज यूज्ड बाय SR रंगनाथन. अब कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज Library of Congress, introduced by Library of Congress. ISO 2709 is related to exchange of data in machine readable form. The latest edition of classified catalog code is 5. The main entry of classified catalog code is being prepared to meet the subject approach. Sayre's list of subject heading was first published in 1923. In Sayre's list of subject heading, X denotes the C entry. The objective of centralized catalog is R.
to avoid duplication, to reduce the cost of cataloging, to achieve uniformity. मतलब all of this, which one of the following is not a subsystem of circulation system? Cataloging. 272. Bibliographic database is a collection of bibliographic record in machine readable form. OPAC stands for online public access catalog. The mechanical method of deriving subject heading from class number is classified index. SLIC stands for selective listening in combination. In which year AACR2 came out? 1978. Class index entry in CCC is known as subject analytical entry. The term canon was introduced by WCB Sayers. Catalog which has numbered entries and word entries is known as classified catalog. IndCat is a union catalog of Indian universities compiled by InflibNet. Sayers subject heading are linked to appropriate DGC numbers. AACR2 Part 2 deals with determination of heading or assessment. Mixed responsibility in AACR2 is connected by semicolon. CCC was first published in 1934. Library of Congress subject heading published currently in 5 volumes. International communication formal for the exchange of cataloging data is MARC. ISO 2709 bibliographic record format is based on fixed and variable field format. Who is associated with systematic indexing system out of the following? Otto Kasser. The concept Soutlink is associated with chain indexing. Find out the odd one. Precious Popsy uniterm chain indexing. Uniterm, the degree to which the subject matters of a document is reflected through the index entry is known as specificity. The term availability is used in AACR2. The concept used for the thesaurus is concerned with equivalent relationship. Which of the following is incorrect? thesaurus contains more subject. ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो उसके द लेटेस्ट कैनन ऑफ कैटलॉगिंग इनिशिएटेड बाय एस आर रंगनाथन इज कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू. रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वाज फॉर्मुलेटेड बाय CA Cutter. In Mark 21 the tag number for addition statement is 250. Law of parsimony refers to overall economy. Principle of osmosis has been propounded by S.R. Ranganathan. First edition of colon classification was published in 1933. In the table in DDC which provides for radical ethnic national groups is table 5. The concept of empty digit facilities, तो इसका हो जाएगा extrapolation array. The digit J64 in the class number 0111 to J64, 51 represents time. उसके बाद कहते हैं हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन 19th edition of DDC? 4. Fusion is a mode of formation of subject. Phase lesson may have to be shown at the subject level, phase level, array level, all of this. The topic statistical method for the social science is example of loose assemblage. फिर 309 the 6th edition of colon classification is freely faceted. The main entry according to the classified catalog code 5th edition is made under call number. Internet is a network of network. The person who can be called the first grammarian in library classification is WCB Sayers. Imputing device is used in colon classification to provide for hospitality in array. In classification scheme, the arrangement of groups consisting of infants, children, adolescents, and adults is known as an array. Which of the following statement about chain indexing is not true? Only one of the entries represent the complete subject. उसके कह सकते हैं FID is related with UDC. The device in colon classification to represent system subject is तो कहते हैं सुपर imposition device जिसको हम SID कहते हैं. Ideas which are conceptually evaluated in the context of different disciplines are called कह सकते हैं verbal mnemonics. The latest version of colon classification is freely faceted. Universal decimal classification is almost faceted scheme. Which of the following is used to provide a classified approach to document? Library of Congress subject heading. उसके बाद PMEST order is applied within main class. Dichotomy means division into two. In UDC, the symbol colon is used for relation. Wall picture principle is one of the principle of
कह सकते हैं फेसेट सीक्वेंस। रंगनाथन्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन एज ग्रुप्ड इनटू 3 प्लेन्स ऑफ वर्क आर आइडियल, वर्बल एंड नोटेशनल। हु रोट द बुक Prolegomena to library classification, S.R. Ranganathan. In DDC 20th edition consists of 4 volumes. Organization of knowledge in libraries and subject approach to books was written by H.E. Willis. A pupa pattern is related with self-arrangement. The first edition of colon classification was published in the year 1933. The first electronic version of DDC 21 are named as Davy for Windows. Expensive classification was published in the year 1891. Name of the index in DDC is relative index. Division into 10 is called decacotomy. The primary basic subject biochemistry is formed by fusion. In DDC the notation 500 denotes which subject, pure science. In CC the concept disease is placed under energy. In decimal classification the main class indicated by Indo-Arabic numbers. Who gave the term modes of formation of subject? S.R. Ranganathan. Which one or more isolate facets are combined with the basic subject? It gave rise to a compound subject. Who created 5 fundamental categories classification? Ranganathan. In colon classification, what is the sign used for attach a speciator? तो हम कह सकते हैं कि ए बी, हाँ ए और बी दोनों होगा, मतलब इसे हाइफन भी और इक्वल टू भी। S.R. Ranganathan आइडेंटिफाई हाउ मेनी मोड्स of formation of subject, 5 mode. In UDC common auxiliary of point of view is represented by 00. Which term is defined by Dr. S.R. Ranganathan as the system of ordinary number used to represent the classes of classification? कह सकते हैं notation. Natural science, physical science, social science example of loose assemblage. The first English edition of UDC is considered as its 4th edition. In the dissection mode of formation of subject now nearly same as fusion. The chairman of advisory committee for libraries appointed by the government of India in 1957 was K.P. Sinha. UAP is a core program of IFLA. The headquarters of International Federation of Library Associations and Institutions is located at Hague. 352 की तरफ आते हैं. Services to the blind by the public library is required by second law of library science. A professional association should primarily functions as a development agency for its member. The committee या communication which made a survey of public libraries in independent India was Sinha committee. उसके बाद the first public library law was passed in Madras, Tamil Nadu. Raja Ram Mohan Rai Library Foundation is a government body to support public libraries. The concept of paperless society was first initiated by F.W. Lancaster. Nishat was based on the recommendation made by Peter Ledger's report जो कि यूनेस्को. फिर 359 इन स्कूल लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यूजुअली नॉट बी फाउंड पेटेंट्स. INIS इज डिसेंट्रलाइज्ड इनपुट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड आउटपुट सिस्टम. तो हम कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा बी, a centralized output center. उसके कहते हैं निस केयर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द एमलगमेशन ऑफ इंसडॉक एंड निस्कॉम. इंसडॉक और निस्कॉम इन दोनों को मिलने से बना है. निस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन. उसके बाद कह सकते हैं हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी of framing library information policies at national level, Dr. D.P. Chattopadhyay. American Library Association was its headquarters in Chicago. The headquarters of Ice Lake is located in Kolkata. Books are for all. Satisfy which law of library science? Second law. Paul Outlet, Henry LaFontaine were instrumental for establishing of FID, full form of IATLI. ATLAS, the Indian Association of Teachers of Library Information Science. Which of the oldest association? तो हम कह सकते हैं ALA सबसे oldest है. Under which organization does DECIDOC functions? DRDO. Which library produce INB? कहते हैं Central Reference Library Kolkata. The draft on National Information Policy for India was prepared jointly by ILA and RRRLF. फिर कह सकते हैं कि library legislation was recently been enacted
इन सब में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस 1968। मौलाना अबुल कलाम आजाद द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मली डिक्लेयर वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज ओपनड टू द पब्लिक ऑन 2 फरवरी 1953। तो इसका हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। उसके बाद द इंडियन स्टेट विच इनेक्टेड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द ईयर 1948 इज तमिलनाडु, जो मद्रास है, ठीक है। सार्क SAARC डॉक्यूमेंटेशन सेंटर established in 1985. Delhi Public Library was established in 1951. The INIS centralized processing center is located at Vienna. Khuda Bux Oriental Public Library is located at Patna. National Library for Visual Handicapped is situated at Dehradun. Library as a living system takes any matter casts of old matters changing in size and takes new shapes and terms. Who questioned is this? तो कह सकते एस आर रंगनाथन। चॉइस ऑफ बुक्स इज एन unending works. Whose questions is this? C.A. Cutter. Unicist, a project of UNESCO, was launched in the year 1972. फिर हम कह सकते हैं द फीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1951. रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स from the library is emphasized by this law of library science. कहते fifth law, God has chosen me as an instrument. The honor done to me should act as inactive to the younger generation to devote their lives who heartily to library science and services. Who questions is this? S.R. Ranganathan. Headquarter of UNESCO is Paris. Which association was established in 2002? SILIP. This particular law of library science gives emphasis on the delegation of the government to enact library legislation in their respective state. Second law, which of the following is not true about public library? कह सकते हैं it prepares the national bibliography. The at present ASLIB stands for Association for Information Management. फिर 392, the RRRLF brings out its official publication known as Granthana. फिर the Library of Congress was established in the year 1800. Who was the chairman of National Knowledge Commission? Sam Pitroda. Identify the association that has changed its original name. LA. National Science Library is located at Nisker, New Delhi. With which agency did UNESCO collaborate to establish UNICIST? कहते हैं ICSU. Which university appoint the first full-time university librarian? Madras University. SDI stands for Selective Dissemination of Information. INB is the secondary source of information. Name the president of Cuba can be found in International Who's Who. The Shannon-Weber model of information is criticized for being too mathematical. Which of the following is Union Catalog? कह सकते हैं कि NUCSSI. Book in print could be categorized as trade bibliographic from USA. Library orientation, bibliographical instruction and user education are related in the following. कह सकते हैं user education is wider and encompasses the other two. कहते हैं half life of information implies that as information is it is used less. उसके बाद 407 की बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज वाज प्रपोज्ड बाय निकोलस जे बेल्किन की ग्रे लिटरेचर मीन्स लिटरेचर विच इज सेमी पब्लिश्ड गैजेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज formal channel of communication, conference, research report and thesis. The term cartography is associated with maps. CAS stand for current awareness services. फिर उसके बाद 414 की तरफ आते हैं प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरियोडिकल्स इज अ टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस. मेथड्स ऑफ assessing information need of user community is known as users study. Alerting service does not include user education. In an empirical research on the impact of user education on library use patterns, library use is an independent variable. The name of the vice chancellor of BHU can be found in university handbook AIU. The price of book My Experiments with Truths by MK Gandhi can be found in Indian books in print. Which of the following is not a thesaurus? Sayers list. The two pioneers developed documentation on an international level where
Paul Outlet, Henry Lefontaine. Mess is a name of controlled vocabulary in medicine. Glossary is a list of technical words with definitions. Name the library sections so which undertakes the work of library organization. Reference. Name the library sections which undertakes the work of stock verification, maintenance. Knowledge is dash form of information, organized form of information. उसके बाद which of the following is a primary source of information? Research journals. Library literature is a secondary source of information. Current awareness bulletin is information products. Census atlas, national volume is an example of dash atlas, demographic atlas. An indispensable functions of thesaurus is representation of relationship between concepts. The concept of microphotography was developed by John Benjamin Dancer. The editor of Encyclopedia of Library Information Science are Ellen Kent and Harold Lancer. University Handbook is a directory. CAS one line stands for Chemical Abstract Service. Referral service means directing the readers to correct source. The organization provides translation services in India is InStock, जिसको कि अब निष्क्रिय है. Method of knowing about information seeking behavior of users in library is called method no reading habits or user study, मतलब both A and B. A sheet of microfilms having multiple micro images is generally called microfilms. Fish. These documents are not primary resources. Thesis, patents, conference paper, index. कौन नहीं है primary resource? Index. World of Learning is a directory. This literature is not published and not available through normal book selling channels. The grey literature. कहते हैं कि ये हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री. द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस केम आउट एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1959. हु कैटेगराइज द यूजर स्टडी इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज? तो मेंजेल. अब फोर पे उसके कहते हैं रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एट trend report. Name of the president of Sri Lanka can be found in statements yearbooks. Which of the following has stopped publishing in the print from since 2012? New Encyclopedia Britannica. Which of the following is not providing encyclopedia type of information? Encyclopedia of Associations. उसके कहते हैं who used the phrase control access dictionary type source? W.A. Kurtz. Which of the following are not reference services? कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूजर प्रोफाइल्स एंड कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट. कहते हैं ऑपरेशंस रिसर्च इज अ टूल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट. 453. Cardex is used for classification. PPBS is related to budgeting. ZBB is related to budgeting. Who has identified the 14 principle of management? Henry Fayol. Who classified management theories in relation to library management? E.G. Evans. Fumigation is related to preservation. PERT is useful for system evolution. The management theory who states that motivation is related to hierarchy of need is Maslow. The correct statement about system analysis is it describe the flow of work. Theory X and theory Y were formulated by Douglas Murray McGregor. FERT and CPM are essential devices for improving qualities changed in operation. The library budget prepared without considering the previous year's budget is zero-based budgeting. Union is strength is the principle of management advocated by Henry Fayol. Which committee recommendation 6.5% of the university budget would be allotted to library budget? Radhakrishnan committee. HRM deals with manpower planning. The high purpose of book selection is to provide the right book to the right reader at right time. Who questions is this? Francis Dury. The three-card system is designed by S.R. Ranganathan. The best reading for the largest number at the least cost is principle propounded by Melvin Davey. The total quantity management term is coined by W. Edwards Demings. उसके बाद the catchwords post-corps was given by Luthi Gulick and L. Urwick. Semantic differential skill is concerned with selection from two opposite positions. 74. Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? Professional attitudes. The stage in the product life cycle curve are
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। उसके कह सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल इज रिटार्ड देयर फ्यूचर deterioration refers to conservation. Scale chain shows authority structure. Segmentation is associated with market survey report. Who propounded minimum, middling, and maximum theories is of reference services. Samuel Rothstein. Controlled group is a term which is used in experimental research. Formulation of fundamental laws is pure research. Citation analysis is helps in identification of code documents. A study aimed at finding the best method of solving library materials is basic research. The questions whose answer are already stated is called clues ended. The research carried out to find out solutions to problem faced by society is known as applied. A pilot study in research is undertaken in order to test the data collection instrument. In the research on information need of chartered accounts, a questionnaire is sent to every fifth member of the official register of chartered accountant. Would this be a satisfied sample? Bibliometrics is a study of quantitative analysis of publication. Research design is a blueprint of research activity, procedure of research. उसके कहते हैं अरेंजमेंट द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टेड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। हम सबसे लिख सकते हैं सबसे पहले कलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, फिर प्रेजेंट करना है, फिर बी। तो DACB नॉन सैम्पलिंग एरर्स इज रेफर्ड टू एज एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इम्प्लाइज formulation of tentative generalization. Hypothesis that is tested for its rejection is null. Deductive logic proceeds general to particular. Lotka's law related to scientific productivity. उसके कह सकते हैं spiral of scientific method. The zenith marks the fundamental laws. Questionnaire is widely used tools in which type of research? Survey research. Four important techniques used to explore the information need of users are questionnaire, investigation, report, observation. In the value of even one datum, it is extreme as compared with remaining data. It can subsequently affect the value of median and modes. Lotka's law is related with author's productivity. The idea of thesaurofacet was developed by Jeans Atchison. Which of the following can be considered as probability sampling? Quota sampling. The mode used for forming the subject humility is through agglomeration. Hypothesis is tentative statements of research. The chi-square test indicates the variability. Cranfield project was associated with subject indexing. Delphi method of research is used to collect data from experts. Bradford's law of scattering is about distribution of articles on a subject in different periodicals. When a source referred to once in the footnote is referred to again and between them no other reference intervenes, then the footnote used the abbreviation IBID. Mean, median, and modes are measure of center tendency. Gibbs law deals with frequency of occurrence of words in a text. Which of the following text can be implied for hypothesis testing? तो कह सकते हैं एप टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ऑल ऑफ दी above. The chi-square techniques used to compare the observed data with that of expected data. In a spiral of scientific method, the span of zenith to descendant is deductive phase. The heterographic processes is a split duplicating method. Which two methods of data collections are closely connected? Scheduled and questionnaire. What does zenith contains in the spiral of scientific method? Fundamental laws. The terms external criticism is relevant to historical method. Research done to find a solution for a immediate problem is known as applied research. Scientific method in research can be used in all disciplines. In a research study, the review of literature helps in selecting a sample. Which of the following is not part of research design?
रिसर्च डिजाइन कह सकते हैं सैम्पलिंग मेथड एक रिसर्च डिजाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओकेजनली यूज्ड हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज in historical questionnaire is used for data collection. Research design means planning of research. और कहते हैं कार्नफील्ड स्टडी आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स total finding of the study. The process of research is mechanical, mental, intellectual, or all of the above. Experimental method of research is also scientific method. A statistical terminology average are also named as a measure of central tendency. Critical incident techniques is one type of diary method. फिर क्या है, parametric data means measured data. If the members of a chosen sample is 8, then the degree of freedom is 7. The t-test is applied when the sample series is small. If a questionnaire is given to every 10th number of a sample population, it is known as stratified sampling. Interview is a data collecting tools. Delphi method means method of research. Correlation is a technique used for analysis of data. A central value of distribution is known as mode. The Center for Research on User Study was established by British Library Research and Development Department UK. Data based on finite number of distinct values are referred to as discrete. Resource sharing is a manifestation of library cooperation. The term ebook stands for electronic book. Nicknet is an example of when which of the following statement is not true. कहते हैं data and information are synonymous. Metadata is not used for evaluating the document. OCLC stands for Online Computer Library Center. The network which is not primarily for academic purpose is NICNet. Bliss is an information network in UK. RLIN stands for Research Library and Information Network. Trans-border data flows means free flow of information between countries. उसके बाद 550 हो गया, तो यहाँ तक हमने 550 क्वेश्चंस देख लिए. अब कुछ और देख लेते हैं इधर. हाँ, तो ये देखिए, number of working days National Library of India in a year is 362. Lotka's law deals with the productivity of authors in terms of scientific papers. The large volume of high velocity, complex and variable data is termed as big data. Sony Unilived the first Blu-ray disc prototype in October 2000. ISO 26324:2012 stands for DOI. ISO 2108 stands is related to International Standard Book Number. The Browning charging system does not include transaction slip. In CC1 is used for Unity, God, World, First, in evolution, etc. is a seminal mnemonics. Identify the mode of formation of subject agriculture of corn lamination. The number of successive characteristics forming the basis of its derivation from the universe of knowledge is known as order of class. What is the third part of colon classification? Classic and sacred books. Subject entry which refers from the name of class and its class number is known as class index entry. The license for assessing the Europa World of Learning online is available through Routledge, जो कि टेलर और फ्रांसिस के द्वारा दिया गया. What is the productivity of Annals of Library and Information Studies published by NISCARE quarterly? Facet publication is a division of Charter Institute of Library and Information Professional. SILIP. उसके बाद हो गया यहाँ तक. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हु ऑर्गेनाइज द 8 सेंट्रल वैल्यूज ऑफ लाइब्रेरियनशिप. माइकल गॉर्मन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स 17 मई एज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS. उसके बाद कह सकते हैं बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय MM Kessler. By which mode management science and research methodology are formed? Distillation. Prefix element of ISBN consists of number of digit 3. Who defined notation as shorthand sign? E.C. Richardson. Which of the search strategy is useful to increase recall output? Truncation. The Right to Information Bill was enacted by the Parliament of India on 15 June 2005.
Who was the first director of Raja Ram Mohan Rai Library Foundation? B.P. Barua. In Ragnathan's terminology, latent facet is a hidden facet. Translational model of communication was suggested by Dean Burnlund. फिर रिसर्च मेथोलॉजी इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज थ्रू एनालिसिस ऑफ डेटा इज नोन एज ग्राउंडेड थ्योरी. चैप्टर 12 ऑफ AACR 2 हैज चेंज्ड इट्स नेम इन AACR 2R 2002. आइडेंटिफाई द चेंज्ड नेम continuing resource. और कहते हैं आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ TQM. तो हम कह सकते हैं एक तो थे फिलिप बी क्रॉसबी, कैरू इशिकावा और जोसेफ जर्न, मतलब ABC तीनों होगा. उसके अब हम लोग कुछ यहाँ क्वेश्चन देखते हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2005. हु डेवलप द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन 5 एक्सिम डिफिनेबिलिटी ऑर्डर